और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के बटन को आपको ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक की हम क्लासेस के अंदर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैं आई वांट टू रिकैप the all classes which we have done last week. Number one, what we did in first week, types of accounting. हम सबसे पहले पढ़ा what are the types of accounting. There are 4 types of accounting. Number 1, manufacturing accounting. Number 2, financial accounting. Manufacturing means cost accounting. Number 2, financial accounting. Number 3, tax accounting. Number 4, management accounting. There are 4 types of accounting: financial accounting, cost accounting, management accounting, and tax accounting. Now before that, we studied about the accounting entries. What are the types of the accounting entries, accounting system? There are 3 types of accounting system. Number 1, single entry method. Number 2, double entry method and accrual system. Number 3, cash basis accounting. There are 3 accounting types, kinds of accounting. Number 1, single entry method. Number 2, double entry or accrual method. Number 3, cash basis accounting. And what about the accounting kinds? There are 4 kinds of accounting: financial accounting, cost accounting, management accounting, and tax accounting. Then we studied in detail about the balance sheet. Balance sheet की 2 sides. Balance sheet का formula हमने पढ़ा. What is the formula of the balance sheet? Balance sheet formula is assets is equal to liabilities plus equity. Then we broken asset in 2 parts. Number 1, current assets. Number 2, fixed assets. We studied about in detail about the current asset. What are the current assets? Number 1, account receivable, inventories, prepayment expense, cash and bank, market securities, these are 4 and 5 types of the current assets: account receivable, inventories, prepaid, cash and bank, equivalent, market securities. All these are under classified in the current asset. Same fixed asset. What are the fixed asset? Fixed asset means those assets which have life in the company more than 12 months or 1 year. Now suppose building, land, vehicle, equipment, etc. So all these combination of these 2 assets is the current assets in the balance sheet. Now what about the liabilities? Again we broken our liabilities in 2 parts: current liabilities and long term liabilities. In the previous classes, we studied in detail about the current liabilities and the long term liabilities. What are the current liabilities? Accounts payable, notes payable, employees payable, liability payable, salary tax payable,
income tax payable, sales tax payable, short-term loans, and current portion of the long-term loans. All these items are classified in the balance sheet in the current liabilities. The detailed statement already done in our previous classes. Separately, we stated about the account payable, note payable, employees liability payable, sales tax payable, income tax payable, current portion of the long-term payable, etc. All these, their definition and about their example we studied in our last class. So if those students who have missed these classes, you are all requested to please review watch our last videos, and all these matters and definition will be updated in the system. Now, what about the long-term liability? Long-term liability of the company which will be due after 12 months. Suppose we took the loan from the bank for 5 years, 4 years, so that is the long-term loan. So this is the structure of the balance sheet. All these items come in balance sheet. Now we study about the income statement. Income statement in this stage, I request all those who are watching our videos, please subscribe this channel and press the bell button for upcoming videos. This will be help for those students who cannot afford the heavy fees of the universities. So this channel will help those students and ताकि वो भी एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें, because तालीम सबके लिए. Now we studied about income statement. Today our topic is income statement. What is the income statement? Income statement shows the revenue and expense of the company and profitability over a period. What is the income statement? Income statement represents the revenue, expense and profitability of the company over a period. It also sometimes called profit and loss statement. क्या मतलब हुआ? इनकम स्टेटमेंट कंपनी की किसी पीरियड की इनकम और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को इंडिकेट करता है. अब इसके व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट? देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. What are the components? Component means the parts of the income statement which will make this income statement. So what are these? Number one, the top revenue. Number two, cost of goods sold. Number three, selling and distribution expense. Number four, admin expense. These are the four components of income statement which comes before the EBITDA: revenue, cost of goods sold, selling and distribution expense,
administrative expense. And then what are the others? Depreciation, non-operating income and expense, financial cost, and taxation. Then net profit. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. These are the 8 parts of the income statement. After these 8 parts, we will calculate the net income or net profit of the company for the particular period. Okay. Now we will discuss about one by one everything. Number one is revenue. What is the revenue? Revenue means the sale or income of the company which he incurred during the period for the month or for the period. What is the revenue? Revenue means the company's revenue means sales service which they incurred for any particular period. That is revenue. यानी कि वो सेल या वो आमदनी जो कंपनी ने किसी खास पीरियड के लिए सर्विस किसी को प्रोवाइड की है या गुड्स किसी को सप्लाई किए हैं, तो वो उसकी सेल पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो उसकी सेल होगी. यानी अगर कोई सीमेंट इंडस्ट्री है तो उसने 1 महीने का अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 1 महीने के अंदर उसने सीमेंट के बैग्स जिस कंपनी को जिस जगह डिस्पैच किए हैं उनकी जो सेल इनवॉइसेस हैं उसका टोटल विल बी कॉल्ड रेवेन्यू. इसी तरह अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है तो उसने 1 महीने के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज को जो सर्विस प्रोवाइड की है, जो इनवॉइसिंग की है अगेंस्ट सर्विसेज, उस टोटल इनवॉइसेस को हम उसकी रेवेन्यू कहेंगे. व्हाट इज द रेवेन्यू? Revenue means the sale and service displayed by the company in a particular period. Now, second is cost of goods sold. What is cost of goods sold? Cost of goods sold means the cost of goods which is offered for the sale, which was sold, the goods which was sold. The goods of the cost which was sold is called cost of goods sold. It includes material, labor, factory overhead. All 3 components of the cost is called cost of goods sold. Which the unit, suppose अगर हमने 700 यूनिट सेल किए हैं सीमेंट के 700 बैग्स हमने सोल्ड किए हैं, तो इसके ऊपर जो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुआ, जो इस पे इंकर हुआ, वो सब की एग्रीगेट कॉस्ट विल बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अंडरस्टैंड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? Is a line item that aggregates the direct cost associated with the selling products to generate revenue. What is the cost of goods sold? Cost of goods sold is a line item that aggregates the direct cost associated with the selling product to generate revenue. What is the direct cost? Direct cost means material, labor and factory overhead. So this is cost of goods sold. Now
हम रेवेन्यू देन इनकम स्टेटमेंट में इसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। देन कम टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में मार्केटिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं, प्रमोशन एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं। वो एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट की सेल करने के लिए मैंडेटरी है या किए जाते हैं, उन एक्सपेंसेस को सेलिंग एक्सपेंस किए जाते हैं। Those expenses which are mandatory, which are necessary for selling the product is called selling and distribution marketing expenses. Suppose we advertise our product on television or newspaper, so that is marketing expense. This is marketing expense. Similarly, if we dispatch the product by courier, the courier expense will be called selling expense. If any product is dispatched to the customer through courier, so courier expenses will be called selling expenses. So these expenses which are directly involved with the selling is called selling and distribution and marketing expenses. Now then that is the admin expense, admin and general expense. All those expenses, all indirect those expenses which are not directly involved with the sale, but to manage the sale is necessary. But to manage the sale, these expenses are necessary, is called administrative and general expenses. Suppose these expenses are mandatory, are necessary for running any business. Suppose the cost of the finance department is cost of the HR department, hiring the staff, hiring the staff. These all expenses are administrative expenses. If we minus gross profit, selling and distribution admin expenses, it will come EBITDA, EBITDA, earning before income tax, depreciation and amortization. If we deduct selling and distribution marketing expenses and admin and general expenses from gross profit, that will come EBITDA. It is called EBITDA. अगर हम gross profit में से selling, distribution and marketing expense और admin expense माइनस कर दें तो हमारा EBITDA निकल आएगा। EBITDA इसे कहते हैं earning before income tax, depreciation and amortization. Then इसके बाद depreciation. Next expense depreciation. Depreciation क्या होता है? Amortization होती है। जो फिक्स एसेट है कंपनी के, उसकी लाइफ अगर जो 5 साल है या 10 साल है, तो over the 5 years or 10 years, whatever the life is, depreciation is amortized, it is coming in under depreciation. Then non-operating income and expenses. Non-operating expenses और income कौन सी होती है? तो वो income, वो expenses जो कि बिजनेस ऑपरेशन से लिंक नहीं करते, वो इनकम, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होते, जो बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस कहते हैं। मसलन स्क्रैप सेल, मतलब स्क्रैप सेल, हमने कचरा बेचा है,
तो इसका बिजनेस ऑप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा कचरा था जो हमने स्क्रैप किया, बेचा है, ये हमारा स्क्रैप इनकम कहलाएगी, अदर इनकम में कैटेगराइज होगी। इसी तरह गेन और लॉस और फिक्स एसेट, अगर हम कोई फिक्स एसेट को सेल करते हैं और उसका हमको कोई गेन मिलता है या हमको कोई लॉस होता है तो ये अदर इनकम और अदर एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस अदर एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, क्योंकि इसका भी ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। I think you have understand what is the income statement now, because we have studied in detail about revenue, cost of goods sold, selling, distribution and marketing expense, administrative expense, depreciation, non-operating expense and income. Now the financial expense. What is the financial expense? Financial expense, those expenses which are pertain to the bank, जो हम बैंक को पे करते हैं मुख्तलिफ मद में। चेकबुक इशू कराई, चेकबुक चार्जेस, पे ऑर्डर बनवाया, पे ऑर्डर चार्जेस, टीटी करवाई, टीटी चार्जेस, एलसी ओपन करवाई, एलसी चार्जेस, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर मार्कअप हमें बैंक को दिया, मार्कअप एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये सब क्रेडिट कार्ड का कोई खर्चा है, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, all these expenses are called financial charges. Then another is income tax, taxation. So whatever the profit we get in the year, the government impose some taxes on the profit. So we will calculate the tax and will make the liability and will come under taxation. Taxation charge to the pre-tax income. टैक्स गवर्नमेंट की मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर मुख्तलिफ इसके ऊपर स्लैब होते हैं, मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। उस कंपनी के रेट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट कंपनी का आ रहा होता है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और उस कैलकुलेशन को हम टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जब टैक्स की रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न जारी होती है तो उसके साथ उसको टैक्स को पे कर दिया जाता है। इन सबको माइनस करेंगे, यानी कि एबिटा में से डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस और अदर इनकम और फाइनेंशियल कॉस्ट, टैक्सेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा कि कंपनी ने पूरे महीने के अंदर, पूरे साल के अंदर, पूरे क्वार्टर के अंदर या पूरे हाफ ईयर में क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। इसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट में नीचे शो हो रहा होता है। अभी हम आपको इनकम स्टेटमेंट की फॉर्मेट दिखाते हैं। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट। सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसके बाद एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक्सपेंसेस के बाद टैक्सेस हैं और उसके बाद नेट अर्निंग है। किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की ये प्रॉपर फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पे इनकम स्टेटमेंट जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। इसके आगे कंपैरिजन भी किया जाता है, मंथ टू मंथ भी कंपेयर हो सकता है, ईयर टू ईयर भी कंपेयर हो सकता है, हाफ ईयर टू हाफ ईयर भी कंपेयर हो सकता है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपेयर हो सकता है। इसी की बेसिस के ऊपर हम फॉरकास्टिंग और बजटिंग भी कर सकते हैं। ये हम अपने आप को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द इनकम स्टेटमेंट और हाउ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। Now at the end of this class, I again request all those who live in Pakistan or outside the Pakistan, please subscribe this channel. This is the education channel. This channel will help those students who cannot afford the heavy fees of the university. I will try to pay their fees. So that's why I request you to please subscribe this channel and press the bell button for upcoming videos. Thank you very much.